Hello guys, welcome or welcome back to my channel, and in today's video we're gonna clean this room. Finally, this room is gonna get cleaned. I've been putting these things off for like such a long period of time. मेरे exams वगैरह चल रहे थे and then life just happened. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. And so I haven't been able to do that much of cleaning. So without a further ado, let's get into the video. Just for some context, this video is gonna be about like a little bit of room makeover kind of a series. I haven't changed much in my room, but I have done some changes, and I also tried to do something ocean theme since this wall is blue. So yeah, budget abhi ke liye thoda tight hai, so I haven't done much changes. On that note, I'll be Besharam and asking you guys to please like, share, comment, and subscribe. Do all the good things that you can do. And without further ado, let's get into the video. So here I was trying to show you guys like how dirty my room actually is. It's not really dirty. I wouldn't call it dirty, but I would definitely call it mismanaged. सबसे पहले सबसे important काम, that is to sort our playlist. So I played some item numbers on my iPad. I mean, Safai without item songs is a crime. It should be a crime. फिर उसके बाद मैंने थोड़े बहुत कंबल तय लगाए, थोड़े बहुत के दो ही कंबल थे बिकॉज मी एंड माई सिस्टर शेयर आवर बेड. सो या आई डिड दैट एंड आफ्टर दैट आई सॉर्टेड माई बुक्स जो आप पीछे काउचेस पे देख रहे हो. It was a like mix of my books, my younger siblings books और मेरे कुछ पिछले assignments and question papers पिछले कुछ सालों के. And I found something very interesting जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी भी अभी आपको. मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। आई रिमेम्बर ये पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं गया था एंड ऊपर से जो टीचर जो इन्विजिलेटर थे हमारे रूम में, शी वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग टू द अदर इन्विजिलेटर. लाइक मतलब ऊपर से वो मेरे पास खड़े थे, तो इट्स लाइक पेपर करते टाइम इट्स सो इरिटेटिंग जब टीचर कुछ बोली जा रहा है बोली जा रहा है बोली जा रहा है एंड यू नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर शीट. सो इट इज़ वेरी अनोइंग व्हेन समवन डज दैट, स्पेशली जब आपको पता है कि बच्चा एग्जाम दे रहा है एंड उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. नॉट इवन डिस्ट्रैक्ट, इट्स जस्ट लाइक इट इज इरिटेटिंग कि कोई बंदा, आप यू ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट एंड एक बंदा आके आपके पास आके कुछ बोली जा रहा है. So yeah, just that. Any which ways, I think I sorted all of these things out. फिर उसके बाद मैंने अपने कुछ medicines वगैरह भी sort करे. And yeah, that's how I did my safai. Now I'm gonna shut my mouth and let the time lapse be played. I was cleaning my room and I found my diary. This is from when I was in ninth standard. So yeah, and I found something very interesting. Yeah, let me show it to you guys. Let me clip you on. Cute. Cute, why cute? Okay. Just so you know, I was completely, utterly obsessed with Harry Potter at the moment. This diary is of 2017. Yeah, 2017 is also written here. Um, so yeah,
Let's just take a moment to appreciate मैंने कितना effort मारा है इसको पूरा draw करने में. And then I also have all the movies that he has done in his whole career up until 2017. See? And I even left the pages blank कि आगे कोई movie आएगी तो I'll also write it down. तो मैंने नहीं लिखी है. My favorite movies done by him, of course, it's gonna be Harry Potter. I was obsessed. See, growing up, मैंने Harry Potter नहीं देखा था इतना. So when I was in ninth class, हमें holidays homework मिला था English का, if I'm not wrong, कि we have to read a novel, and I for the very first time got introduced to Harry Potter at that time. मैंने उससे पहले टीवी पे नहीं देखा था Harry Potter या कुछ भी ऐसा कुछ मुझे पता नहीं था exist करता है. So when I say you, I was obsessed, and I still am. It's just that it has become kind of my comfort movie. Especially the first three movies are like मेरे को जिस मर्जी दिन बिठा के तुम दिखा दो, I will still watch it with the same enthusiasm. मैंने अपने घर पे सबको हैरी पॉटर पगलू बना दिया है. मेरी मम्मी also watches it. My dad also watches it. Like they know each and every character. So yeah, that's that, and all of the movies. And then it's my favorite actress, Emma. Ah, so cute. The movie she has done. I'm gonna cry. I'm gonna cry. And then I didn't completed it. It's written my favorite movies done by Emma Watson. I haven't completed that. I think as we grow, as I have grown, at least for मैं ये अपने लिए कह सकती हूँ ये बात. I have stopped watching movies. I've stopped watching TV in general. कि मतलब पूरा दिन या तो रील्स शॉर्ट्स यूट्यूब इसी में मेरा दिन निकल जाता है. मैंने इतना कम कर दिया मूवीज देखना. कैन यू इमेजिन आई हैवंट वॉच धुरंधर येट. मेरे को पिछले 4 महीने से देखनी है धुरंधर. में से वो नहीं देखी गई है अभी. सो या मैंने उस टाइम पे थोड़ी सी जर्नलिंग भी ट्राई कर रही थी. लाइक आई ट्राई डूइंग दैट बट आई failed miserably at that. So that is also here. Let me read something for you guys. Let me find something interesting. It is written on 30th October 2017, okay? This is Monday, 10:30 p.m. Today was a really Today was really my bad luck. Can you believe what happened? In SST period, I was in my own world. In bracket, I slept. But before the ma'am saw me, I woke up. मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था. This is the same day I reached home and I asked my mom, "What have you made for lunch?" She said nothing. I told her to make halwa puri for me. She made it and I ate only two puris. Oh my god, what have I written? Like, also read a book called High School Musical. So also the fact that I also started reading in ninth standard. उससे पहले मैं कोई भी book नहीं पढ़ती थी. And I remember my first book, that actually non-fiction book, kind of novel, musical, whatever you want to say, was actually High School Musical, and I quite enjoyed it, honestly. Yeah, so but it was ultimately Harry Potter which made my interest peak more. It enhanced my interest more in reading, and yeah, मेरे को उसी वजह से इंटरेस्ट आया था. तो उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी. उससे पहले तो आई वॉज नॉट दैट मच ऑफ अ रीडर, बट मैंने हाई स्कूल म्यूजिकल सारी पढ़ी है. मतलब आई थिंक आई वॉच्ड first two movies of High School Musical, but I've read all the books. You guys tell me in the comment section what books have you read in your, the time when you started reading books वगैरह. उस टाइम आप लोगों ने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं? Over the span of 2.5 months, like ये 7 diaries are scattered over the period of 2.5 months. I have just like written only 7 diaries. Wow. This is the reason that I cannot journal. Even if I want to, I cannot journal because मेरा ऐसे वो ही नहीं होता कि मुझे लिखना है, मुझे ग्रैटिट्यूड करना है या कुछ भी है, मेरे से नहीं होता. तो आई वुड रादर हैव इट digitally rather than write it down. But yeah, that's all.
Now let's get back to cleaning because बहुत सारा सामान है and we also have to decorate our wall. Here I was taking out all the furniture जो मेरे को नहीं चाहिए था अपने कमरे में, which were these small stool tables and also this whole setup of my study table situation. So I was taking this table out of my room and then I was putting it in another room जो मेरे room के साथ में है, ताकि my sister could use it. I do not use study table anymore but she can. Plus उसकी 10th है तो I will be assuming कि वो अच्छे ढंग से use करेगी. एंड भाई यहाँ पे शाम को इतनी प्यारी धूप आती है ना, जस्ट टाइम वो पढ़ने बैठती है, मतलब इट लुक्स सो प्रिटी. सो या आई डिड दैट एंड देन आई वेंट बैक टू क्लीनिंग. ओके सो सब कुछ क्लीन आउट हो चुका है एंड मैंने कमरा भी अच्छे ढंग से साफ कर दिया है. नाउ इट्स टाइम टू डेकोरेट दिस वॉल. मेरी बहन ने कुछ तो चीजें बनाई हैं. सो वी वांटेड लाइक अ बिट ऑफ ओशन थीम बिकॉज ये वॉल थोड़ी टील ग्रीन कलर की है, तो वी वांटेड टू गो विद द ओशन थीम. तो उसने कुछ तो चीजें बनाई हैं, 3D मॉडल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं which we're gonna paste with the help of double-sided tape. So yeah, let's do it. तो मैंने चिपका दिए हैं जो अभी मेरे पास अवेलेबल थे. अभी माई सिस्टर इज गोना पेंट सम मोर बिकॉज उसका मन है एंड ऑफ कोर्स उसको पसंद है ये सब करना. तो वी व्हाट वी आर थिंकिंग इज टू पेंट सम कोरल रीफ्स यहाँ पे एंड जब वो होगा तब आपको कंप्लीट लुक दिख जाएगा इसका. बट फॉर नाउ इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस. आई रियली लाइक इट. दो आई विश यहाँ पे थोड़ा और सामान होता बिकॉज इट्स लुकिंग थोड़ा सा खाली खाली सा. इट्स गिविंग लाइक कि सब कुछ ट्रैवल करके ऊपर लाइट के पास जा रहा है. सो इट्स गिविंग अ रियली नाइस क्यूट टच टू इट. आई रियली लाइक इट. For now that's all and with that I'll see you guys in the next video. And ये तो मैं बोलना ही भूल गई. Don't forget to like, share, comment and subscribe. And yeah, do support me. See you guys in the next video. Bye bye. Love ya.